We are studying Canto 1, Chapter 3, Krishna is the source of all incarnation, and text 8 today. So let us begin. Trityam Rishi Sargam Ve Devarshitvam Upetyasa Tantaram Sattvatam Vachasta Nishkarmayam Karmanam Yataha Trityam Rishi Sargam Ve Devarshitvam Upetyasa Tantaram Sattvatam Vachasta Nishkarmayam Karmanam Yataha तृतीयं ऋषि सर्गं वे देवार्षित्वम् उपेत्य सा तान्तरं सत्वतं मधास्ता नैष्कर्मयं कर्मणं यतः. Yes, Puja Mataji, read the shloka. Mataji. तृतीयं तृतीयमरसि संग्रमैव देवर्षित्वम् उपेत्य स तन्त्रं सत्त्वतम् अचस्ता नैष्कर्म्यं कर्मणं यथा. Asta, go ahead. तत्रियं ऋषि सर्गं वै देवर्षितत्वम् उपेत्य सा तन्त्रं सत्त्वतम् अचस्ता नैकर्मयं कर्मणं यतः. Translation, okay, word to word meaning. Anyone else? Trityam, the third one. Rishi Sargam, the millennium of the Rishis. Why? Certainly. Devarshitvam, incarnation of Rishi amongst the demigod. Upetya, having accepted. Sa, he. Tantram, exposition of the Vedas. Satvatam, which is specially meant for devotional service. Achasta, collected. Nishkarmayam, non-fruitive. Karmanam, of work. Yataha, from which. Translation and purport by Srila Prabhupada. In the millennium of the Rishis, the personality of God had accepted a third empowered incarnation in the form of Deva Rishi, Narada. Now, yesterday we discussed about first the Purusha avatar, then Guna avatar, then we discussed about Manu's like मनुज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने बोर इनकारनेशन के बारे में पढ़ा, दैट इज द युग अवतार. ठीक है, तो सत्य युग में किन का अवतार हुआ था बोर फॉर्म में, और हमने ये भी पढ़ा था कि every incarnation has some function and उनकी डिटेल ऑलरेडी शास्त्र में मेंशन होता है. ठीक है, नाउ in the millennium of rishis the personality of God had accepted a third empowered incarnation. दूसरी empowered, this is empowered incarnation. ठीक है, now this is the वो युगा अवतार के बारे में था, this is the empowered one जो empowered होते जैसे नारद मुनि, who is a great sage among the demigods. He collected exposition of the Vedas which deal with devotional service which inspire non-fruitive action. Purport by Srila Prabhupada. The great Rishi Narada, who is an empowered incarnation of personality of Godhead, propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord, all over the universe, and the different planet and species of life are his disciples. So Narada Muni को दक्ष प्रजापति से श्राप मिला था. जब वो जो दक्ष के जो पुत्र थे, जितने भी 100 के 100 पुत्र थे, सबको उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया था. Like he preached them and they all become brahmachari, and Daksha got very angry with Narada Muni. He says you can never stay at one place. कि अब एक जगह पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, means you will keep traveling. So that's an opportunity, for devotees. What is this? कि भक्तों के लिए देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक जगह टिकेंगे नहीं. He's like keep traveling, keep traveling. I remember इससे एक चीज याद है, एक बार one time one devotee said to Prabhupada, I wanted to be a speck of dust at your lotus feet. Prabhupada says it's not possible. He says why? Prabhupada says because my feet keep moving. Because I'm preaching these young boys and girls, so their parent has cursed me that I cannot stay at one place. And it's like a boon for me because I'm also traveling all around the world and preaching this Krishna consciousness the same way Narada Muni do. Narada का मतलब क्या होता है? Nara means Narayana and Da means that gives. So he give Narayans to everyone, means he give Lord to everyone, means he preaches everyone. So that is Narada. So all great devotees of the Lord all over the universe and in different planets and species of life are his disciples. So Narada Muni is a great sage. कौन नहीं है उनके शिष्य? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ठीक है, all the great devotees, they are all the disciples of Narada Muni. Srila Vyasadeva, the compiler of Srimad Bhagavatam, is also one of the disciples of Narada Muni.
So Narada is the author of Narada Pancharatra, which is the exposition of the Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. तो नारद मुनि जी ने एक किताब दिया है, that is Narada Pancharatra. ठीक है, that is the exposition of all the Vedas that talks about the devotional service. ठीक है, then this Narada Pancharatra trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of fruitive work. नारद पंचरत्न क्या सिखाता है कि जो कर्मी लोग हैं, फ्रूटी वर्कर हैं, कि वो अपने इस कर्म बंधन से कैसे छुटकारा पा सके. The conditioned souls are mostly attracted by fruitive work because they want to enjoy life by the sweat of their own brows. तो क्या बोला है कि whole universe conditioned souls are mostly attracted by fruitive work. ठीक है, hard earned money, they are very attracted to that. The whole universe is full of fruitive workers in all species of life. The fruitive workers include all kind of economic development plans, but the law of nature provided every action has a resultant reaction, and the performer of the work is bound up by such reactions, good or bad. तो every karmic reaction है, laws of nature है, तो कोई भी आप अच्छा या बुरा करोगे तो कर्मों से तो बंद हो गई है ना, until or unless you use that in Krishna service. The reaction of good work is comparatively material prosperity, where the reaction of bad work is comparatively material distress. ठीक है, अच्छा करोगे तो मटेरियल खुशी मिलेगी, बुरा करोगे तो मटेरियल दुख मिलेगा. ठीक है, दोनों चीज में मटेरियल तो है ही है. ठीक है, so matter is there, and then it says but material conditions either in so called happiness or in so called distress are all meant ultimately for distress only. ठीक है, चाहे भौतिक जगत में सुख हो या दुख हो, दोनों कहाँ तक लीड करते हैं, डिस्ट्रेस की तरफ, क्योंकि दुखल्याम है ना. भाई या कृष्ण ने खुद कहा है, भाई दुखों का घर है, आप पागल लोग हो जो सुख ढूंढ रहे हो. Foolish, isn't it? Then it says foolish materialists have no information of how to obtain eternal happiness in the unconditional state. Sri Narada informed this foolish fruity worker how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased man of the world, how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. The physician directs the patient to take treated milk in the form of curd for his suffering from indigestion due to his taking another milk preparation. So the cause of the disease and the remedy of the disease may be the same. क्या बोला है? Siddhartha informed this foolish worker how to realize okay. It must be treated by an expert physician like Narada. The Bhagavad Gita also gives the same solution of serving the Lord by the fruits of one's labor that will lead one to the path of nishkarmya और liberation. तो क्या बोला है हमें, अगर अपने कर्म बंधन से छूटना है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अपने कर्म बंधन से छूटने का एक ही तरीका है, that is by serving the Lord. By once, अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हो तो उनके फल जो है वो भगवान को अर्पण करो, then you will be like free from those bondage. So that is there. So Narada Pancharatra, so Narada Muni in his teachings of Narada Pancharatra, he has talked about all those things, how a conditioned soul can come to the platform of devotional service. Okay, so this is Narada Muni is an empowered incarnation of Krishna. Okay, we'll move to the next. तूर धर्म कला सर्गे नर नारायणम ऋषि भूतवात्मो समापितम आकरो दुश्चरम तपहा. In the fourth incarnation, the Lord became Nara and Narayana. ठीक है, अभी कौन सी incarnation आ गई, नर नारायण की. ठीक है, नर नारायण ऋषि हैं, the twin sons of the wife of King Dharma. Thus he undertook severe and exemplary penances to control the senses. ठीक है, अब चौथी इनकारनेशन कौन सी आ गई, नर नारायण की. ठीक है, as King Rishabha advised his son tapasya or voluntary acceptance of penance for realization of the transcendence is the only duty of human being. It was so done by the Lord himself is an exemplary manner to teach us. कि मनुष्य जीवन मिला है तो तपस्या के लिए मिली, तप के लिए मिली है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिली है. तप करके कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है. ठीक है, तो इसके लिए भगवान ने स्वयं नर नारायण ऋषि के रूप में और हमें बताया है कि कैसे हमें तपस्या करनी है. तपस्या मीन्स voluntarily acceptance of some pain or penances for realizing the absolute truth or realizing the transcendence. ठीक है, जैसे हम लोग voluntarily सुबह उठते हैं, बाहर का नहीं खाते, कुछ austerity follow कर रहे हैं ना, so similar way. The Lord is very kind to the forgetful soul. He therefore comes himself and leaves behind necessary instruction and also sent his good sons as representative to call the all conditioned soul back to Godhead. So see, Krishna is so kind. कभी कभी तो खुद ही आते हैं
अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और कभी कभी अपने ही किसी प्यारे भक्त को भेजते हैं जो कि हमें भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बता सके, हमें गाइड कर सके. Recently, within the memory of everyone, Lord Chaitanya also appeared for the same purpose, to show special favor to fallen soul of this age of iron industry. The incarnation of Narayana is worshipped still as the Badri Narayan on the range of Himalayas. ठीक है, जो नंद नारायण जी ऋषि के जो पर्वत है, जो आश्रम है, दैट इज इन बद्री विशाल, बद्री नारायण में है, जो उत्तराखंड में हिमालयस में. इज एनी ऑफ यू हैव बीन टू द बद्री नारायण? आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? आई हैव. माताजी नहीं. आप नहीं गए हो? I have been to the Badri Vishal in 2018. It's a very wonderful. There is Narayan Rishis also. Their ashram is there, so they are performing austerity. And it says, देखो भगवान इतने कृपालु हैं, स्वयं भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए. सो कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा? चैतन्य महाप्रभु से जस्ट चैंट हरे कृष्णा. सो वेरी सिंपल वे. तो सिमिलरली द इनकारनेशन ऑफ नारायण इज वर्शिप्ड. जो ये जो इनकारनेशन, इसको अभी भी पूजा जाता है. कहाँ पे? बद्री नारायण, बद्री विशाल में, जो हिमालयन रेंज में. ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट. पंचमा कपिलो नामा सिद्धेश कला विप्लुतम प्रवोचाशूर्य संखयम तत्वग्रामा विनिर्णयम. ये याद रखना, मैं पूछूंगी इनकारनेशंस के बारे में. ठीक है. The fifth incarnation, Lord Kapila, he is also empowered one. Okay? Or Lord himself he is foremost among perfect beings. He gave an exposition of the creative element and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. We'll study now. The sum total of creative element is 24 in all. Each and every one of them is explicitly explained in the system of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is generally called metaphysics by the European scholars. The etymological meaning of Sankhya is that which explain very lucidly by analysis of the material element. This was done for the first time by Lord Kapila, who is said herein to be the fifth in the line of incarnation. So Kapila Muni, Narada Muni, all Devuti Mata के पुत्र थे. ठीक है, Kapila Dev. So he also gave the teachings. Kapila Dev की teachings भी हैं, and he gave the Sankhya philosophy. Sankhya philosophy basically it leads to devotional practices only. ये हम लोगों ने भगवत गीता में डिस्कस किया इसके बारे में. तो अभी हम जब आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे भगवत गीता के, तो हमें और ज्यादा पता चलेगा सांख्य फिलोसफी का. सांख्य फिलोसफी का मतलब एनालिटिकल स्टडी. ठीक है, कि अभी जैसे भगवान है तो कोई एनालाइज करे, यार ये शरीर खत्म होता है, ये जगत भी खत्म होगा, फिर क्या खत्म नहीं हो रहा? आत्मा. अच्छा, अब आत्मा खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते होगी जो खत्म नहीं होती, किसी ऐसे चीज की पार्ट एंड पार्सल होगी जो खत्म नहीं होता. सो लाइक दैट दे डू द एनालिटिकल स्टडी, and then leads to, actually it leads to devotional service only. Okay, so that was given by Kapila Dev. Okay, so we'll move to the next shloka. Sastam atred apatyatvam vrita prapto nasuyaya anvikshikyam alarkaya praladadbhiya uchivan. The sixth incarnation of Purusha was the son of sage Atri. He was born from the womb of Anasuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendental to Alarka, Prahlad, and others, Yadu and Hayaya, etc. The Lord incarnated himself as Dattatreya. फिर Dattatreya के रूप में आए, son of Rishi Atri and Anasuya. The history of the birth of Dattatreya as an incarnation of Lord is mentioned in Brahmanda Purana in connection with the story of devoted wife. It is said that the Anasuya, the wife of Rishi Atri, prayed before the Lord Brahma, Vishnu, Shiva as follows. My Lord, if you are pleased with me, and if you desire me to ask from you some sort of blessings, then I pray that you combine together to become my son. This was accepted by the Lord, and as Dattatreya, the Lord expounded the philosophy of the spirit soul and specially instructed Alarka, Prahlad, Yadu, and Hayaya. Okay? So this is the story. We'll move further. I don't think there is much explanation. चाहिए समझ में आ रहा है ना mere study से. तथा सप्तमा अकूतयम रुचिर्यज्ञो भयाजयता सायं दया सूरग्नेर अपत स्वयं भुवांतरम. The seventh incarnation was Yagna, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the change of Swayambhuva Manu and was assisted by demigods such as his son Yama. अब सेवेंथ इनकारनेशन यज्ञ की थी.
ठीक है, जो उन्होंने 7th मनु को असिस्ट भी किया था, और उनके पुत्र कौन हुए? यमा। द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, हरिबोल हरिबोल, the administrative post occupied by the demigods for maintaining the regulations of the material world are offered to the highly elevated pious living beings. क्या बोला है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑक्यूपाइड द डेमिगॉड, कि अब देवताओं को ये जो पोस्ट है वो कैसे मिलती है? Those who are highly elevated pious living beings. जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी की पोस्ट किसको दी जाती है? जिसने अपने 100 जन्म में कोई भी पाप नहीं किया होता. He has not committed any sinful activity in his 100 lifetime. ठीक है, so इसी तरह से ये देवी देवताओं का फॉर्म मिलता है, ये अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर्स को. तो उसकी क्या है कि दे आर वेरी हाईली एलिवेटेड पायस लिविंग बीइंग्स. When there is a scarcity of such pious living beings, the Lord incarnate himself as Brahma, Prajapati, Indra, etc. and takes up the charge. अब जब ऐसी जीवात्मा नहीं होती, इतनी पुण्य जीवात्मा जो कि देवताओं की पोजीशन को एक्वायर कर सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र की पोजीशन ले लेते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्वयंभुवा मनु, द प्रेजेंट पीरियड इज ऑफ विवस्वात मनु. ये हमारा जो है, ये कौन से मनु का पीरियड है? विवस्वात मनु का. ठीक है, ये 6th 7th है, दिस इज द 7th मनवंतरा. ठीक है, 7th मनवंतर चल रहा है इस समय, और अभी के जो वो हैं, क्या नाम है, हमारे जो मनु है वो विवस्वात मनु है. ठीक है, सो स्वयंभू मनु के टाइम पे देयर वाज नो सुटेबल लिविंग बीइंग हु कुड ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ इंद्रा, the king of Indraloka, heaven planet. The Lord himself at that time became Indra. तो उस समय स्वयंभू मनु के समय में भगवान ने स्वयं इंद्र की पोस्ट संभाली थी, assisted by his own son like Yama and other demigods. Lord Yagna ruled the administration of the universal affairs. ठीक है, so we'll move further. अस्तमे मेरुदेव्यं तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयं वर्तं धीरणं सर्वर्षमा नमस्कृतम्. The 8th incarnation was King Rishabha, son of King Nabhi, and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection. King Rishabh Dev की teachings आती हैं 5th canto में. This is my one of the favorite canto, 5th one, and the 5th chapter especially is my favorite one. Because it talks about the reality of material world, and it's a very heavy philosophy there by Rishabh Dev. So he's the son of King Nabhi and his wife Meru Devi. In this incarnation, he showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. Okay. The society of human beings is naturally divided into 8 by orders and statuses of life, the 4 division of occupation and 4 division of cultural advancement. The intelligent class, the administrative class, the productive class, the labor class are the 4 division, the 4 statuses of cultural advancement toward the path of spiritual realization. Labor class are the 4 division of occupation, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य. ठीक है, और आगे कौन से आश्रम आ जाते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास. ठीक है, ये हमारे 4 वर्ण आ जाते हैं. आउट ऑफ दीज ये आश्रम है हमारे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास, ये आश्रम है, और वर्ण आ जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ठीक है, 4 वर्ण और आश्रम. So out of these, the renounced order of life or the order of sannyas is considered the highest of all, and the sannyasi is constitutionally the spiritual master of all the orders and division. In the sannyas order also there are 4 stages of upliftment toward perfection. अब संन्यास भी 4 प्रकार के होते हैं. कौन से होते हैं? कुटीचका, बहुदका, परिव्रजकाचार्य और परमहंसा. ठीक है, हमारे में बोलते हैं ना शिला प्रभुपाद को परिव्रजकाचार्य, परमहंस. So like that it says. क्या बोलते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य. We say like that. जब हम प्रेम ध्वनि गाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. So he's a परिव्रजकाचार्य परमहंस. The paramahansa stage of the life is the highest stage of perfection. ठीक है, this order of life is respected by all others. Maharaj Rishabha, the son of King Nabhi and Meru Devi, was an incarnation of the Lord, and he instructed his son to follow the path of perfection by tapasya, which sensifies one's existence and enable one to attain the stage of spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. Every living being is searching after happiness, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable. Foolish men seek after material sense pleasure as the substitute for real happiness, but such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by the dogs and hawks. अब ये जो इंद्र तृप्ति आप ढूंढते हो भाई, उसको तो कुत्ते
सुअर भी इंजॉय कर रहे हैं भौतिक जगत में. No animal, bird or beast is bereft of this sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. The human form of life, however, is not meant for such cheap happiness. The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness. तो मनुष्य जीवन इस cheap happiness के लिए नहीं है. It is meant for eternal and unlimited happiness by spiritual realization. This spiritual realization is obtained by tapasya or undergoing voluntarily the path of penance and abstinence from material pleasure. Those who have been trained for abstinence in material pleasure are called dhira or men undisturbed by senses. Only these dhira can accept the order of sannyas and they can gradually rise to the status of Paramhamsa, which is adored by all members of society. King Rishabha propagated this mission, and at the last stage, he became completely aloof from the material bodily needs, which is a rare stage not to be imitated by foolish men, but to be worshipped by all. So, shall I stop here or move further? पढ़ लेते हैं ये भी. ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धेमं औषधिर्विप्रस् तेनयं सा usatamaha. O Brahmanas, in the ninth incarnation, the Lord prayed for by sages, accepted the body of a king Prithu. पृथु महाराज की कथा आती है हमारे चौथे अध्याय में, 4th कैंटो में. हम लोग पढ़ेंगे ये सब, ठीक है. Who cultivated the land to yield various produce, and for that reason the earth was beautiful and attractive. So क्या बोला है? Before the advent of King Prithu, there was great havoc of maladministration due to the vicious life of previous king. The father of Maharaj Prithu, the intelligent class of men, namely the sages and the brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. अब जो किंग वेना थे पृथु से पहले, एक्चुअली ध्रुव महाराज की डायनेस्टी में आते हैं, तो किंग वेना वाज अ वेरी इम्पायस किंग. उनकी वजह से कहते हैं जब राजा इम्पायस होता है तो क्या होता है, राज्य में बहुत हाहाकार मचता है. तो जो ब्राह्मणों ने उनको किंग वेना को वार्न भी किया था कि सुधर जाओ नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा. एंड ही वाज नॉट एट ऑल सुधरा हुआ व्यक्ति, नहीं सुधरे वो, और ब्राह्मणों ने मंत्रा रिसाइट किए एंड किल्ड द किंग वेना. और मगर क्योंकि उनके में सीमन जो ध्रुव महाराज का था, मतलब उन्हीं के पाए, ही वाज अ डिवोटी, एक डिवोटी का सीमन चल रहा था. सो दिस ब्राह्मण चर्न्ड हिज थाई, प्रे किया, एंड थ्रू हिज थाई केम किंग पृथु महाराज आए थे, एंड ही वाज अ वेरी पायस एंड डिवोटेड किंग. So it is the duty of the king to be pious and thus look after the all around welfare of the citizens. These are all empowered incarnations of Lord, ठीक है. It is the duty of the king to be pious and thus look for after the welfare of the citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duty, the intelligent class of men must dethrone him. कि क्या बोला कि जब भी एक राजा सही से कार्य नहीं करता तो इंटेलिजेंट क्लास को क्या करना चाहिए, उसको गद्दी से निकाल देना चाहिए. अब जैसे हमारे में डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री काम नहीं करेगा तो जनता को क्या करना चाहिए, उसको नीचे उतार देना चाहिए. तो सिमिलर वे, that's the duty. The intelligent class of men, however, do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of public. तो जो इंटेलिजेंट लोग खुद नहीं राज्य संभालते हैं, उनको और भी कार्य हैं. तो instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of Lord, and the Lord came as Maharaj Prithu. Real intelligent men or qualified brahmanas never aspire for political post. Maharaj Prithu excavated many produces from the earth, and thus not only did the citizen become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also become beautiful and attractive. रूपम सा जगरे मत्स्यम चक्षुषुद्धोदि संप्लवे नाभि आरोप्य महिमायम अपद वैवस्वतम मनुः. क्या बोला है? When there was a complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was deep within the water, the Lord accepted the form of a fish. ये 9th canto में आता है. And protected Vivaswata Manu, keeping him upon a boat. तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आप 9th कैंटो में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, वहां पे सभी मनुष्य के बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. अभी के लिए जितना दिया गया उतना we will study. According to Shripad Sridhar Swami, the original commentator on the Bhagavatam, there is not always a devastation after the change of every Manu, and yet this inundation after the period of Chakshusha Manu took place in order to show some wonders to Satyavrata. But Satyavrata is Vivasvat Manu, ठीक है. But Sri Jiva Goswami has given definite proofs from authoritative scriptures like Vishnu Dharmottara, okay, that there is always a devastation after the end of each and every Manu. Srila Vishwanath Chakravarti has also supported Jiva Goswami
And he also quoted from Bhagavatam about this inundation after each Manu. Apart from this, the Lord, in order to show special favor to Satyavrata, a devotee of the Lord in this particular period, incarnated himself as Matsya Avatar. ठीक है, जो मीन फिश का फॉर्म लिया था भगवान ने. So I think I will stop here for today. इतना आपको थोड़ा सा याद रखो, ठीक है. Anyone having any questions, comments or anything? So please go ahead. और आज का है तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है. थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब याद रखने की कोशिश करना. चलो माता जी, आई कांट स्पीक. ये ओके आस्था. यस, हु एल्स नेक्स्ट? और किसी का कुछ कहना है? पूजा माता जी, नविता, एनी क्वेश्चंस? आज का समझ में आ रहा है? जस्ट द इनकार्नेशन जस्ट मेंशन, सो वी आर जस्ट स्टडीिंग अबाउट देम. यस पूजा माता जी. नो माता जी क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये है कि हाँ एक क्वेश्चन था कि माता जी हमें कैसे मतलब पता लगेगा कि मतलब हम कौन से मनु में, लाइक 14 मनुज है ना? तो माता जी शास्त्र में मेंशन है ना, अभी एक्चुअली मनवंतरस भी होते हैं. दे लाइक फर्स्ट मनवंतर, सेकंड मनवंतर. अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, 7th मनवंतर चल रहा है. इस दौरान इट्स एन टाइम पीरियड ऑफ विवस्वात मनु. माता जी जैसे कि मान लीजिए अभी पूरा खत्म हो गया, लाइक सतयुग कलयुग सारा कुछ खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट मनु होएगा, मतलब फिर 8th मनु ऐसे आता है मनु? यस, फिर आफ्टर 8th मनु, फिर 9th मनु, फिर 10th मनु. ओके ठीक है ठीक है. ठीक है. सो डिवास्टेशन के बाद में हर एक मनु अपना अपना टाइम पीरियड लेता है, और ये शास्त्र के अनुसार हमें पता चलता है कौन कब कहाँ क्या बन रहा है. ठीक है. सो वी हैव टू स्टडी द बाइबल. एनी फर्दर क्वेश्चन? नो माता जी. ओके. नविता माता जी, आपको कुछ पूछना है? No, Mataji. Okay, if nothing, so then we will stop. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गंधर्व भागवतम की जय, श्री प्रपात की जय, ऑल द समर डिवोटीज की जय. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल इन द इवनिंग भागवत गीता क्लास. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण.